Now children, today let's start with chapter number 5, that is weather and climate. So what is weather? It is atmospheric condition over a short period of time जो hour to hour, day to day change होती है, and the weather of a place can change any time at any place and it cannot be generalized. If we talk about climate, so it refers to average weather condition of a large area for the period of span about 30 years. राइट यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, आपका precipitation है, cloudness, sunshine, pressure, and they all are the most important or basic elements of weather and climate. So let's study about the difference between weather and climate, and the scientists who study atmosphere and its related phenomena उसको हम कहते हैं meteorologist. So here the difference is given between climate and weather. Components की बात करें, weather में आपका rain, hail, thunderstorm, flood आता है, short events होते हैं. यहाँ पे आका fog, frost, hail, long period time. ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं. यहाँ पे डे टू डे होता है, यहाँ पे आपका स्टैटिकल रहता है इनफॉर्म वेदर और लॉन्ग पीरियड होता है. यहाँ पे जो स्टडी करते हैं वेदर को मेट्रोलॉजिस्ट होता है, और जो क्लाइमेट की स्टडी करते हैं वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते हैं. साइंटिस्ट यूज सैटेलाइट एंड कैप्चर प्रेडिक्ट फॉर, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक वेदर और एवरेज टेम्परेचर उसको देखा जाता है, प्रिडिक्ट करा जाता है. नाउ एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. फर्स्ट इज टेम्परेचर. So temperature क्या है? Atmospheric temperature refers to degree of hotness or coldness. Temperature of the atmosphere changes between day and night and also season to season. सबसे important factor जो होता है वो distribution of temperature in isolation, which is incoming solar energy intercepted by the earth. Amount of insolation increases from the equator to the poles, and therefore places are situated close to equator. They are hotter than the places which is close to place. नाउ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. देखो हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, इसमें दो स्केल होते हैं, एक तो सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट, राइट. सो वी कैन से दैट द स्केल इन सेल्सियस, सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है. वही फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. इन ऑर्डर टू मेजर हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर इन अ डे 24 आवर्स में आप थर्मामीटर का यूज करते हो, जिसको हम कहते हैं 6 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर. For this thermometer 24 hours get maximum and minimum temperature, और जो डिफरेंस होता है इसके बीच में मैक्सिमम और मिनिमम के, एंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ मैक्सिमम मिनिमम इज द एनुअल मीन रेंज ऑफ टेम्परेचर. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. एयर टेम्परेचर इज नॉट सेम एवरीवेयर. इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ अ प्लेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन. वी हैव 3 डिफरेंट जोन्स. वी हैव टॉरिड जोन जो आपकी लाई करती है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सन फेल्स वर्टिकली ऑन दिस जोन, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है. वहीं हम टेम्परेट जोन की बात करें, सो द रीजन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन आर्टिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन अंटार्कटिक सर्कल इन सदर्न हेमिस्फीयर. यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? मॉडरेट होता है. वही फ्रिजिड जोन की बात करें, आर्टिक सर्कल टू नॉर्थ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल सदर्न हेमिस्फीयर. अब जो फैक्टर्स है जो आपके टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, फर्स्ट इज लैटिट्यूड. टेम्परेचर जो होता है हाई होता है ट्रॉपिक्स पे, लोअर लैटिट्यूड्स पे क्या होता है? पोल्स में लो होता है. और इक्वेटर पे जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं और पोल्स पे स्लैंटिंग होती है. नाउ एल्टीट्यूड. टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट. द रेट एट विच द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट इज 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 सेंटीमीटर, एंड द रीजन इज दैट यू विजिट हिल स्टेशन इन समर हॉलिडे. Ocean currents. There are 2 types of ocean current: warm current and cool current. Warm current climate post warm. Same. Distribution of land and sea. Land get heated more rapidly than sea during daytime. वहीं नाइट में बात करें, land cool हो जाता है earlier than the sea. Now relief features. Mountains act as a barrier. जो mountain है ऐसा barrier act करता है, and the Himalayas stop the cold winds from China to enter India. Right? So atmospheric pressure क्या होता है? Many of the forces within our atmosphere are easily recognized by us is like a temperature outside, stepping outside, and we can feel amount of wind we see at the level of saying back and forth, but we cannot feel or see the atmosphere. Pressure is the amount of force or pressure exerted by the atmosphere on the object जिसके बीच में वो located है, right? सो साइंटिस्ट एंड यूज स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बैरोमीटर कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं. द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल. हाईएस्ट होता है सी लेवल
और डिक्रीज करता है विद हाई, एंड व्हेन द टेम्परेचर इज हाई द प्रेशर इज लो. द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो pressure. Now factors affecting atmospheric pressure. First is altitude of a place. Decreases with the increase of altitude. Decrease in pressure is about 1 centimeter of mercury of every 100 meter. Air temperature, air pressure is also affected by temperature of atmosphere. Cold air exerts great pressure as it is heavier than hot air. वही rotation of the earth causes displacement of mass and resulting into change in the pressure. Water vapor, moist humid air is lighter than the, because water vapor is humid at air displaces equal volume of dry air. Now given volume of humid air contains comparatively less nitrogen and oxygen than dry air. Wind, horizontal movement of the air is also all along the surface of the earth is called wind. High pressure area से low pressure area की तरफ a wind is named according to the direction from which it blows. So a west wind comes from west and the north wind comes from north. Wind vane जिसे हम weather chalk कहते हैं, and the instrument जिससे हम wind को measure करते हैं उसको कहते हैं anemometer. We have different types of wind, planetary, periodic और local. Planetary winds की बात करें, ये permanent winds होती हैं, ये prevailing winds होती है, ये wind है वो blow करते हैं at global level. Permanent in nature होती है, they blow throughout the year in a particular direction, right, between permanent pressure belts of the world. They get deflected in both hemisphere according to the Farron's law. If we talk about periodic winds, ये जो winds होती है blow करती है regularly during period of day and night. इनको हम seasonal और periodic wind कहते हैं. ये unequal heating और cooling की वजह से responsible होती है. The land and the sea breeze and the monsoon are the typical example of periodic. ये typical example है आपके किसके? Periodic wind. Local wind की हम बात करें, ये those हैं which is generated by local climatic conditions. Land and sea breeze are caused by the unequal heating of land. Here आपको case study दिया that you must read. Then what is moisture? The air, water vapor present in the atmosphere is called moisture. Now, when the temperature increases, the capacity of air to hold water vapor also increases. जो condition होती है वो reversed होती है in case of increasing or decreasing temperature. Atmosphere get water vapor from water body. Evaporation क्या होता है? It is a process जिसमें हम change करते हैं liquid को to vapor. Actual amount of water present in the air, and the condensation is the process in which water vapor starts converting into tiny water droplets. If the temperature further falls down, the water droplets होती है वो किसमें convert हो जाती है? Ice crystal में. And what? Fog, mist, dew, clouds and rainfall are the main forms of condensation. Rainfall. What happens when the rain-laden clouds rise upward? They expand. They also become cooler because of the moving away of hotter region. Saturation point is reached. Water vapor contained in them is condensed. So this raindrop become heavy and fall on the ground. उसको हम क्या कहते हैं? Rainfall कहते हैं. That is known as rainfall. The imaginary lines are called isotop. Now we have three types of rainfall. Convectional rainfall. Warm air is called convectional current. Convectional current जो होते हैं वो क्या करते हैं? Carry करते हैं deal of moisture in the cool down upper part of the atmosphere. Then we have orographic rainfall when mountains or highlands act as a barrier to moisture laden winds. ये rainfall cause करते हैं, and in this type of rainfall, what happen? You can see that one side of hill जो होती है वो high rainfall receive करती है, and what happen उसको हम windward side कहते हैं, और जो दूसरी side होती है उसको leeward side कहते हैं. ठीक है? Now, cyclonic or frontal rainfall, it focus meets the cold front of the warm air, masses rises upward. What happen? इससे क्या होता है? Cloud का formation होता है, and what it causes? Rainfall. देखो जब clouds heavy हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा heavy हो जाता है, उसमें water मतलब जब वो ज़्यादा भर जाता है तो किस फॉर्म में? बारिश की फॉर्म में क्या होता है? हमारे लैंड. Front is the border zone between two air masses, जिनके क्या होता है? Different temperature होते हैं. Now weather forecasting. Weather forecasting is a complex process. It is done by meteorologist with the help of sophisticated. देखो different device और instrument का use होता है for checking the weather forecasting कि change in temperature किस वजह से हो रहा है, air pressure कितना change हो रहा है, humidity कितनी change हो रही है, and meteorologists are the people who study these records. ठीक है, आप देखते हैं कि हम future weather predicts को TVs पे, radios पे देखते हैं, and the airmen must know that what kind of weather they may meet along with, and the fishermen must know whether there will be a storm or cyclone or not.
राइट वो कौन किससे पता चलता है? फिशरमैन से. Right, this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.